Hello and very warm welcome to each one of you watching the video. My name is Reeti Arasthana and welcome back to my YouTube channel Cbse Courses with Reeti. As you know, we were doing the chapter carbon and its compounds. A chapter in which we are going to understand each and every detail, the introduction video, the video of how to name the carbon compounds, the functional groups videos, the isomers video, everything is there on the channel available. So kindly go through it and watch the video till the end. Today, I am going to talk about the last functional group. In the previous two videos, we talked about halogens, alcohols, keton, and aldehyde, and I tried to tell you and expose you to all the questions related to which you can see in your examinations. The last functional group is carboxylic acid. Its suffix is oic acid. I can also write it as COOH or C double bond oxygen single bond OH. Now you will say that in a few minutes only I have written so many things on the board that now it seems to be confusing. Is it? Okay. Let me tell you. Oh, let me tell you what is functional group first. Functional groups are the group of atoms. Atoms are the group of atoms which join the chain of the carbon compounds, and it now the property of that carbon compound depends on that functional group. जैसे we learned alcohol, that was COH. This OH was for alcohol, its suffix was OL. So this OH when joins with the carbon, it changes its property, right? Where's the duster? I'm not able to find it. Okay, got it. So alcohol जो OH है basically, वो जब कार्बन से मिलता है, so it changes its property, it alters its property quite easy. In the same way, I gave you the proper definition of functional groups along with the 4 types of functional groups that is in our syllabus. The fifth is carboxylic acid. Not going to dig into the details about functional groups. If you want to do the video, the link I'll post in the comments below. It will be pinned. You can just go through the videos, and I promise you that the concepts of the functional groups will be crystal clear to you. And if any doubts, you can message me, you can comment me anytime you want, right? Okay. C double bond oxygen and single bond OH is carboxylic acid, like aldehyde. Can you tell me what was aldehyde? CHO. C double bond oxygen, single bond hydrogen. This was your aldehyde. Can you see the difference in this and this? Here double bond oxygen same, but यहाँ पे single bond hydrogen था, single bond OH के साथ है. That's the difference. एल्डेहाइड मैंने सिर्फ एक टाइप बताने के लिए किया. Now carboxylic acid COH, C double bond oxygen, single bond hydroxide. Suffix है oic acid. Now if I write methanoic acid, can you draw the structure for methanoic acid? Now, till the date, we have done so many questions that I believe you should know. If you don't, no worries. That's what I'm here for. Right? Okay. Meth means single carbon. Okay. N means single bond. Okay.
Oic acid stands for, it's a suffix for carboxylic acid. That means C double bond oxygen, single bond hydroxide. But is it methanoic acid? If you are going to say right, no, you are wrong. Why? Because you have to check that the valency is completed. एक point mantra for the chapter is कभी भी valency complete करनी ही है आपको. You can't just go with the flow कि okay we are done or something like that. Please pay special attention to it कि सिर्फ ऐसे लिखने से you are not going to get any marks because this is wrong answer. मैंने सिंपल मेथेनोइक एसिड कहा है और इसमें आपका सी का वैलेंसी शुड बी कंप्लीटेड. सो 1 2 3 4 HCOOH. I can write it like this. You will say why HCOOH? तो मैंने जैसे एल्डिहाइड में सिखाया था कि CHO को अलग निकाल दो. पहले ये लिख दो जो बचे हुए हैं और फिर ये CHO को एज इट इज लिखो. ये मैंने एल्डिहाइड में एग्जांपल दिया था. इन द सेम वे आई एम सेइंग कि ये COH तो ये है, ये इसको अलग कर दो, इसको छुपा लो. अब देखो क्या बच रहा है. H. तो इस H को पहले एज इट इज लिखो और फिर ये पूरा COH लिख दो. एंड glad to tell you this is your simplest carboxylic acid. This is the simplest. Simplest क्या होता है कि वो बेसिक है. In the group for carboxylic acid, the starting member is HCOH or the methanoic acid. ठीक है. जैसे कीटोन का सिंपलेस्ट बताना क्या होता है. सिंपलेस्ट कीटोन we did in the last video. If you don't know the answer, go back to the video, watch it, and if you know the answer, comment me below. Comment is all yours. Okay, so the answer I'm going to tell you in the ending of the video. तो ये होता है simplest carboxylic acid. Rubbing it. या अब बताओ. वो तो मैंने आंसर बता दिया कि सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है और मेथेनोइक एसिड. बट इफ यू लेट्स से यू डोंट नो द आंसर, let's say you don't know the answer, so how you are going to tell that the simple carboxylic acid is what? तो इसका होगा n is equals to 1 formula. अब this particular point I really explained you in a detail, but still let me just get through it again. Sorry, just a second. Let me just put it inside the chain. Okay. So, in this functional group, we have carbon already. ठीक है? We have carbon already. और N का मतलब क्या होता है? Number of carbon including in functional groups. तो जैसे n is equals to 1 है, means मुझे इसमें कोई ऐड नहीं करना है कार्बन. अगर मैं बोलूं कि ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है तो n is equals to 1, ये नहीं कि एक और कार्बन ऐड कर दोगे. नो, इस n का मतलब है कि टोटल number of carbon including functional group should be 1 here. जैसे यहाँ तो ये हो जाएगा simplest carboxylic acid. बट simplest carboxylic acid ऐसे पता लगाने का क्या तरीका है? simplest, आप ये बताओ एक simplest functional group क्या होगा? What will be a simplest functional group? एक simplest functional group वो होगा जिसमें minimum number of carbons हो. सबसे छोटा simplest क्या होता है? जैसे मैं if I write it here 22:4. Is it in the simplest form? Simplest क्या होगा? You will see कि हम तो इसको कट करेंगे 2 से and it will be this in the simplest form. Similarly,
फंक्शनल ग्रुप का अगर मैं किसी का सिंपली स्ट्रक्चर बनाने के रही हूँ, दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट वर्जन ऑफ इट, द बेसिक थिंग। जैसे कीटोन में हमें 3 कार्बन चाहिए होते हैं। व्हाई? बिकॉज इसका रूल होता है कि जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा उसके दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे नेसेसिटी होती है 3 कार्बन की। वरना जनरली we need how many carbons? n number of carbon, I mean 1 कार्बन। द बेसिक स्ट्रक्चर के लिए कम से कम 1 कार्बन की जरूरत है। अगर मैं कीटोन को एक एक्सेप्शन मानूं तो, क्योंकि इसका रूल ही है कि इसके तो दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, तो इसमें तो 3 कार्बन चाहिए कीटोन में। बट अबाउट द अदर फंक्शनल ग्रुप, जो उसका एक बेसिक क्राइटेरिया होगा, दैट विल बी n नंबर ऑफ कार्बन 1। एक कार्बन चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस एक कार्बन लोग क्या समझते हैं दैट इसमें एक और कार्बन ऐड कर देते हैं। दैट इज नॉट राइट, नो दैट्स नॉट राइट। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग योर फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन है ये खुद ही एक कार्बन है, सो मीन्स कोई कार्बन ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 लिखा होता तो आप देखते कि यहाँ तो एक ही कार्बन है तो एक और ऐड करना होगा, बट यहाँ तो मैंने एक ही लिखा है ना। सो द बेसिक थिंग वाज सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड मीन्स 1 कार्बन। दिस 1 कार्बन मीन्स इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप, नॉट एक्सक्लूडिंग। ओके, इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को जोड़ के n आता है। Never mind, let me just rub this. Now we'll take few examples of it. Oh, we'll take few examples. Like, let's play a game kind of thing. Can you tell me how to draw ethanoic acid? For your easiness. Oic acid marks कर दिया, इससे suffix पता चल जाएगा. Now, if you forgot what is suffix, so let's say ये मेरा word है, root word, तो इसके पीछे जो लगेगा वो prefix होगा, इसके आगे लगने वाले को हम suffix कहेंगे. Looking like we are more going to dig into English right now? No, we are not. We are going to be here only. तो suffix समझ आ गया, मेन वर्ड के आगे लगने वाला वर्ड. तो इथेन के आगे ओइक एसिड लगा है, that refers to that this particular compound has carboxylic acid as its functional group. Just listen what I am trying to say. This particular compound, ethanoic acid, has carboxylic acid as its functional group. अब draw कैसे करेंगे? I think you all have tried to draw it by now and some of you might have succeeded as well. So, eth means 2 carbons. Eth means n is equals to 2. ये n क्या है? Total number of carbons including the carbon in your functional group. n का मतलब single bond. एंड ओइक एसिड तो अपने में बता रहा है कि इसका मतलब हुआ COOH. 1 2 3, ये तीनों को साथ रख के मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. Quite easy now, right? N is equals to 2 means 2 carbon first of all. चलो ठीक है, 2 carbon, then single bond ही है. Now putting COH, तो COH ऐसे. No, you are wrong here. N is equals to 2 means total number of carbon including the carbon in your functional group. तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 कार्बन हो गए थे, लेकिन मैंने 1 2 3 कार्बन ड्रॉ कर दिया है. मीन्स COH का मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध सीधे COH लिख दिया. No, not at all. What does that mean is something like this. ऐसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए. COH का मतलब ये नहीं दैट यू आर गोइंग टू जस्ट पुट दैट
in every and any case. No, it means कि इस तरह से आपका स्ट्रक्चर दिखना चाहिए. ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स व्हाट? योर फंक्शनल ग्रुप. एंड यहाँ पे valency complete. So this is your what? Ethanoic acid. Now एक और एग्जाम्पल लेंगे. Although I know that carboxylic acid is a short topic, क्योंकि आपने फंक्शनल ग्रुप्स कर लिया. ऐसे नहीं है शॉर्ट टॉपिक और इजी टॉपिक. Not at all. Nothing is easy. But it is that you have understood the chapter completely by now. You have done many examples. और अब हर एक टर्म को you are going able to understand it more quickly, rapidly. That's why. तो एग्जाम्पल करते हैं साथ में. And I want you to be focused and watch each and every example and do it along with me. Next question is beauty. Oh, my pen. It's not really working nice, right? I hope it's visible. Let me just say it aloud. Butanoic acid. Butanoic. Got it? Butanoic acid. How will you draw it? फटाफट जल्दी से ड्रॉ करो. I am waiting for you all. Giving you few minutes. Pause the video and now we are going to start with it. This but means N is equals to 4. N means single bond. And this oic acid means COOH. Right? Correct? I think red pen is quite visible to you all. So let me just try using my red pen. So N is equals to 4. So 1, 2, 3, 4. सिंगल बॉन्ड. ठीक है, सिंगल बॉन्ड है. COH. अगेन ये COH और ये N is equals to 4 में कंफ्यूज नहीं होना है. This N is equals to 4 means total number of carbon including the carbon in your functional group should be 4. So again ऐसे ऐड नहीं कर दोगे कुछ भी. ये ऐड नहीं कर दोगे क्योंकि फिर 5 कार्बन विल बी देयर. सो नो. सो हाउ विल यू डू दैट? बस इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन को प्लेस कर दोगे एंड यू विल गेट योर फंक्शनल ग्रुप. 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड COOH. 3 थिंग्स आर डन. आप ऐसे एग्जाम में भी कर सकते हैं इन योर रफ कि ऐसे से पहले इस नेम से जस्ट गेट दैट व्हाट यू हैव टू डू एंड जस्ट टिक मार्क इट. जस्ट चेक बॉक्स कंप्लीट. तो नाउ अ थिंग इज कि क्या मैं ये फंक्शनल ग्रुप जो COOH है इसको मिड में लगा सकते हैं? देख लेते हैं. हो गया राइट? ऐसे लगा सकते हैं ना? ऑफ कोर्स नॉट. यू कांट. व्हाई? बिकॉज इस कार्बन की वैलेंसी देखो मैंने कितनी कर दी है. 1 2 3 4 5. इज इट पॉसिबल दैट कार्बन हैज 5 वैलेंसी? नॉट एट ऑल. 4 ही इलेक्ट्रॉन से तो 5 कैसे शेयर कर दिया? If my carbon has 4 electrons, how am I sharing 5 electrons? यहाँ पे तो लेकिन यही हुआ ना, बीच वाले कार्बन में लगाया तो यही मतलब तो निकल रहा है. बट आप ही सोचो, you have 5 chocolates and I am asking you to give me 8 chocolates. Is it possible? Or let's say you have 2 chocolates and I am asking you to give me 3 chocolates. Is it possible? You will say that अगर है ही नहीं मेरे पास तो मैं लाऊं कहाँ से? That will be your aggression irritation mode on. In the same way, कार्बन गुस्सा करे इससे पहले let's rub it. Let me just rub it. Okay. तो इससे एक पॉइंट पता चला. पोजिशनिंग ऑफ COH. COH से मेरा मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड. So positioning of carboxylic acid will be in beginning or ending, not in
middle. Please note it down. If you are not writing it down, at least keep it in your mind always. ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, you just remember them, just go through them again and again, so you will understand the basis of it. जैसे अभी मैंने ये करके दिखाया, समझ आया कि ये बीच में क्यों नहीं लग सकता है, बिकॉज अगर मैं इसको बीच में लगा दूंगी then the valency of the carbon will go up to 5 and that's not possible. इसीलिए you have to put this functional group either in the beginning or the ending. तो अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करके पहले तो ब्यूटेनोइक एसिड बना लेते हैं. 1 2 1 2 1 2. अगर कोई student is just having this video, the first video as functional group, and you are having so many doubts, so don't worry, go through the functional group part 1 and part 2 videos. I am sure you will understand it. So this is your butanoic acid. Count how many number of carbon? 4. They are having single bond. It is having the 4 valency completed every carbon. और फंक्शनल ग्रुप भी है ब्यूटेनोइक एसिड. वी डिड इट राइट. एक और क्वेश्चन करें, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. लेट मी थिंक ऑफ अ बिग वन. हेक्सेनोइक acid and your homework is to draw pentanoic acid. Draw pentanoic acid and methanoic, not methanoic, what am I doing? Ethanoic acid. And let me just write down your homework first. Let me just remember pentanoic acid, ethanoic acid, hexenol, propanol actually, propanol, hexenol, and bromo, pentane, and simplest ketone and octanol. This is your homework. आपको ये सारे सॉल्व करने हैं. ओके, I'll try to post a video in which we'll discuss the answers of this. But abhi ke liye you have to do these questions as your homework. And if you are not having any doubts in these questions, if you are able to understand, able to write the correct answer for these, I'll say that your functional group is very, very much clear. Okay, although you can just Google them, the name just pentanoic acid, ethanoic acid, hexenol, ethanoic acid, you will get the answers. Okay, but still, agar you will have any doubts, you can comment me below and I'll arrange a video for it. But 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's my humble request to draw the structure for these 8 compounds, please. और अभी के लिए draw hexenoic acid. गिविंग यू फ्यू मिनट्स. अभी तक ड्रॉ कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज कर लो, क्योंकि मुझे आई टुक टाइम इन राइटिंग दी होमवर्क क्वेश्चंस एज वेल. हेडिंग होमवर्क देके यू हैव टू डू इट. ओके, सो हेक्सेनोइक, हेक्सेनोइक acid. Hex means n is equals to 6. En means double bond. And oic acid means COOH as your functional group. Right? Now how will you draw? First of all 6 carbons draw कर लेंगे. 1 2
3, 1 2 3 4 5 6। नाउ कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, जैसे मैं यहाँ लगाती हूँ, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप लगाना है। फंक्शनल ग्रुप की पोजिशनिंग आई टोल्ड यू दैट ईदर यू हैव टू पुट इट इन द बिगिनिंग और द एंडिंग। अब लेकिन अगर मैं यहाँ लगा दूं तब तो रॉन्ग हो गया ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लगाऊंगी। तो अब कहाँ लगाऊं फंक्शनल ग्रुप? यहाँ लगा लो, राइट। सो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्साइड। नाउ सम ऑफ यू आस्क मी कि अगर मैं इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को यहाँ लिख दूं, OH को यहाँ लिख दूं, कुछ हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। बट दिस इज बेसिक वे इन विच वी आर लर्न टू राइट इट डाउन। बट अगर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर यू आर गोइंग टू चेंज, किसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, इट डजेंट मैटर, बट वैलेंसी 4 ही रहनी चाहिए। यू हैव टू चेक दैट। कभी भी चेक ये करना है कि ना ये 4 से कम होनी चाहिए वैलेंसी कार्बन की, नीदर इट शुड एक्सीड द वैलेंसी। तो हो गया N6 हो गए, डबल बॉन्ड लगा दिया, COH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्साइड लगा दिया। तो अब बस क्या करना है, आई हैव टू कंप्लीट द वैलेंसी। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. This is your hexenoic acid. No trouble in guessing the answers. If you did the right answer, just tell me in the comment below. Let's check how many of you are able to do the right answer. And draw this homework questions, draw the structure. It will be greatly helpful to you, because practice makes a man perfect and you should always strive for perfection. With this note, I am going to end the video carbon and compounds, carboxylic acid or the functional group, part 3 videos. In the next video, I am going to complete the chapters of science first. Also, I am going to come up with English explanatory video, the poems, and I will explain you in such a way using the English as a medium. Whenever needed, I'll try to speak in Hindi as well. I will speak in Hindi, but most of the time I will try to give you a brief of the poems in English language only, because then it will be easier for you to write down the answers in your examination. If I tell you the answer, explain you it in Hindi, then it will need your time to just translate it in English and write it down. Okay, so I will try to explain you in such a way that I provide you with the vocabulary, with the understanding, explanation, everything, and so that you can continue to write down in examination by just watching my videos, because that's my self-assessment during giving the examinations. Till then, we are done with the carboxylic acid. I'm so happy that we understood the topic functional group. Isomers की video डाल चुकी हूँ मैं, so go check it out. And we are done with the very important topics of this chapter. We have to do just the chemical properties, and I will try to make it super easy for you. Till then, bye bye, have a great day ahead. If you like my videos, you like, subscribe and share my channel. Also, don't forget to ring the bell hang button so you'll get all the notifications of my channel. Till then, subscribe to my channel and stay tuned. Thank you for watching it till the end.